ꯅꯪꯗꯤ ꯃꯤꯟꯁꯦꯜꯂꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯖꯅꯐꯝꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣ ꯏꯃꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯂꯧꯇꯥ. Hello everyone, today is 1st of April and we are going for a short ride, and the ride will be 100 kilometers long, and we are going to Jiribam, Manipur. So it's 5 o'clock in the evening and शाम के टाइम पे ऐसे ढाबे पे रुक के चाय पीना मुझे बहुत पसंद है. He's Bhaskar Jyoti Borgohai, and we are working together. He is my friend. We are working in the office of the District and Session Judge Karimganj, and this is just an evening ride, and we have done almost 25 kilometers. So let's move after drinking tea. भैया कैसे हो? ठीक है, आप सुनाइए. So we have reached Jirighat, and Jirighat is the border of Assam and Manipur. There is a river जिसका नाम है Jiri River, which is a tributary of Barak River, and now we'll enter Manipur. Manipur starting district is Jiribam, so we have to make ILP from there to enter Manipur. So Jiribam is nearby, and we'll make ILP, and after that we'll go to my in-laws house. Good morning everyone. Today is Good Friday, and we have just attended Good Friday service. So we'll make ILP from Jiribam and we'll move towards Imphal. So we'll have our breakfast right now. And how are you feeling, Bhaskar? Yeah, I'm quite excited. This is my first time I visit Manipur. And yeah, we'll have fun on the way. ठीक है. We are in Jiribam right now, and we are making ILP. For entering Manipur, we have to make ILP. For making ILP, we need to give Aadhaar card or voter identity card. This is Jiri River, which is a tributary of Barak River, and this is a bridge which is in the border of Assam and Manipur, and that side is Assam, and this side is Manipur. So हमने इनर लाइन परमिट अभी बना लिया है जिरीबाम से, और हमें मिला है 15 दिन के लिए इनर लाइन परमिट. सो यहाँ पे मुझे व्हीकल एंट्री करना पड़ेगा. व्हीकल एंट्री करने के बाद हम लोग जा सकते हैं इम्फल. Going towards Imphal right now. We'll collect our baggage from my in-laws' place, from nearby village.
have entered Tamenglong district of Manipur, which is 8 to 10 kilometers away from Jiribam district. So we almost rode 30 किलोमीटर एंड यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यू है। तो बेसिकली आईएलपी के बारे में मैंने पहले भी बोला था और उधर ज़्यादा बात नहीं कर पाया। तो आईएलपी बनाने के लिए पहले तो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है और ये लोग 15 दिन के लिए आईएलपी इशू करते हैं। तो ये लोग मांगते हैं आईएलपी में एक नंबर और एक नाम जो कि मणिपुर का होना चाहिए। आप लोग अगर होटल बुक कर रहे हो तो होटल ओनर का नंबर या नाम दे सकते हो। और ये लोग क्या करते हैं कि पुलिस मणिपुर पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, उन लोगों को कॉल करके पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग, you have to give one mobile number and one name. You have to write on ILP form and they will verify it if you are staying or not, and they will issue that ILP after that by charging 100 rupees for 15 days. And if you are bringing your vehicle, own vehicle like motorcycle or bike or car, you have to enter it there. You have to register your vehicle number, name, everything they will write, and they will give you a pass, and after that you can go ahead with your inner line permit to visit Manipur for 15 days. So this is ILP. If you can see, they have issued from 2/4/2021 and it will be valid till 16/4/2021, जो 15 दिन के लिए देते हैं। और ये फी रिसिप्ट है जो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग। बाई कैश और बाई चेक भी दे सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ द मेन थिंग। सो विल गो फॉरवर्ड। सो राइट नाउ वी आर हियर एट मकरू विलेज एंड विल बी हेडिंग टुवर्ड्स इम्फल। जूता और पैर दोनों गया कीचड़ से। अब ये साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे एक रेलवे स्टेशन है जो कि नीचे बना हुआ है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये लोग एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दूर पे शायद आपको दिख रहा होगा, बट ये ब्रिज बहुत ही लंबी है और ऊंचाई पे है काफ़ी।
name is Barak. This is, I think, Barak River. That's the condition of the bridge. Very pathetic condition. New bridge they are constructing over there. So we have reached Nungba village and we have ordered Maggie here, and we'll move towards Rangpang, and then from Rangpang we'll go towards right side towards Bishnupur, and from Bishnupur we'll go Moirang, and then we'll reach Loktak Lake. So we are coming from this way, NH 37, and straight goes to Imphal via None, and this is Rangpang village, and we have to go right side, which will lead us towards Bishnupur and then Moirang, and then we'll reach Loktak. लोकतक लेक पहुंच गए हैं और ये लोकतक लेक का एंट्रेंस है। रात हो चुका है, लगभग 9 बजे। रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होम स्टे। ये भैया हम लोग को लेके जाने वाले हैं लोकतक फ्लोटिंग होम स्टे पे। ये रात का 9 बज चुके हैं अभी, और इस बोट में हम लोग जाएंगे इसके होम स्टे पे, जिसका नाम है लोकतक फ्लोटिंग होम स्टे। वी आर सो मच एक्साइटेड। वी हैव रीच्ड लेट बट yeah, we will go by boat right now. Night time boating will be quite exciting. यहाँ पर क्रोकोडाइल भी क्या? क्रोकोडाइल नहीं है। मछली है ना? मछली है। बड़ा बड़ा मछली होगा ना? इतना बड़ा तो नहीं है, लोग पकड़ लेते हैं। हाँ, कल सुबह देखो। अच्छा, कल 5 बजे उठ के ये नाव में जाएंगे ना? जी भैया।
So it's been 30 minutes we are on boat and we are heading towards our homestay. It's really interesting. Nighttime boating, first time in life, and we are really enjoying it. और ये हम लोग का फ्लोटिंग हाउस। So this is Loktak floating homestay and this is in Thanga village. So हम लोग गूगल में सर्च कर रहे थे लोकतक फ्लोटिंग होमस्टे। फ्लोटिंग होमस्टे में रहने का बहुत पहले से मन था, तो सर्च करते ही आ गया था लोकतक फ्लोटिंग होमस्टे। इनका नाम है सूरज लेशराम और इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही ये बिज़नेस शुरू कर दिया था। इनके मम्मी और इनके पापा भी इनके साथ है और इनका उम्र है जस्ट 21 साल। 21 साल की उम्र में इन्होंने अच्छी एक बिज़नेस शुरू कर दी है जो कि बहुत अच्छा है। और ये लोकतक एकदम लेक के बीच में है और ये विलेज का नाम है थांगा विलेज। और हम लोग जब नुंगबा पहुँचे थे तो हम लोगों ने कॉल किया था कि हम लोग आ रहे हैं और बुकिंग भी नहीं किया था, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैनेज हो जाएगा। और रात का डिनर के लिए इन्होंने उधर ही पूछ लिया था हमसे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो हम लोगों ने बोल दिया था जो जो खाएंगे, जो जो रिक्वायरमेंट था सब कुछ इन्होंने पूरा कर दिया था। और इनकी मम्मी ने खाना बनाया था, बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाया था, बहुत टेस्टी हुआ था। और आने के बाद ही खाना मिल गया था, तो खाना खाने के बाद अभी जस्ट इधर बैठे हैं। अभी रात के 10 बज चुके हैं और थैंक यू सो मच, वेलकम भैया। बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। इन्हें बताया कि ये लोकतक का पहला फ्लोटिंग हाउस है और ये पहला फ्लोटिंग हाउस है लोकतक का। और कल हम लोग क्या क्या घूमने वाले हैं ये अगर बता सकते हैं तो। कल लेक में सुबह सुबह फिशरमैन आता है। हाँ हाँ। और कितने बजे आएगा? 4 बजे 5 बजे वो लोग घर से निकलेंगे, हम्म। फिर यहाँ वहाँ सब मछली पकड़ेंगे और मछली पकड़ने वाला भी देखेंगे, मछली भी देखेंगे और घूमने भी तो जाएंगे। टूरिस्ट आने से मतलब यहाँ पे क्या क्या और घूम सकते हैं मतलब? लेक टूरिस्ट आने का तो यहाँ पे तो पहाड़ में जाके पानी देखना और फिर मछली पकड़ने वाला देखना और रिंग रिंग बनाता है मछली पकड़ने हाँ, के लिए, हाँ। ये भी देखना। ऐसे ही है। जो सामने नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी सामने है शायद। नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमाजो नेशनल पार्क। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अच्छा अच्छा, वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है क्या? वो फ्लोटिंग है। अच्छा, तो कल होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।